in which 5 different speakers are there, and they will be delivering their lectures on the different topics related to the main theme, that is research ethics and project writing. The speakers to the technical sessions today are Dr. Arun Kumar Sir, Professor Ashok Kumar Ghosh, Professor Avalendra Thakur, Dr. Dharmendra Kumar Yadav, and Dr. Digvijay Singh. These are the 5 speakers who will be giving their lectures today, and this is mostly beneficial for the science streams, faculties, and research scholars. Now, our first speaker and the guest for today for this first technical session is Dr. Arun Kumar Sir. I request Arun Kumar Sir to please come on the dais and grace the occasion, sir. So please. ये तो चल गया. Now I would request Poonam Man, Department of Zoology, Magadh University, both here, to felicitate our guest, our first speaker for the session, with mementos and khada. Ma'am, please. Thank you, sir, for being with us today. A brief introduction of our eminent speaker. With a teaching experience of about 4 decades, Dr. Kumar has served the cause of education both in the capacity of an educator and an administrator. He is the former chairman of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, Bihar, former head of physics and electronics, as well as professor in charge of all vocational courses at AN College, Patna. He is also the former IQAC coordinator of AN College, Patna and Patliputra University, and is at present the IQAC advisor of AN College, Patna. I now invite him to take the stage for his lecture. Over to you, sir. Thank you. Since this workshop has been organized by IQAC, therefore, I have taken into account their contribution. Therefore, I have deliberately chosen a topic. That is research ethics, a precursor to quality research, especially in criterion field, that is research, innovation, and actually research ethics. If you comply with research ethics, then naturally you will do a quality research. And when you do a quality research, that will be very, very beneficial for NAAC assessment. This criterion 3, which is research, innovation, and expense, constitutes 25% of. There are 7 criteria, and criteria 3 alone is of 250 marks out of 1,000 marks. Actually, this mark is not only 1,000, but there is a weighted system, and that is system generated weighted benchmark weighted system, and it goes from 0 to. Suppose you have a data or you have an answer, you have answered a letter which is below a threshold, then
the weightage will be 0. Even you have some data, you have uploaded something, but still weightage will be 0. And suppose that question is of 25 marks, then 25 multiplied by 0 will be 0. And if you have a value above that threshold, then according to proportion, the weightage will be 1, 2, 3, and 4. Suppose that question is of 25 marks, then it will be 100. 25 into 4 will be uh, given 100 marks. And that is 1000 marks is converted to 400. And accreditation is CGPA is counted on that basis. That how many marks you have obtained out of 400 marks. That is why I have chosen a different topic. Research ethics is there, but I have avoided project writing because there will be so much overlapping. There are so many speakers and all will speak on the same topic. Therefore, I am just associated the concept of research ethics with research and then research with assessment and accreditation by NICE. That's all. There is a small technical issue. It will be rectified. Take the point. The topic is the topic is research ethics, a precursor to quality evaluation of research and innovation in NICE assessment and accreditation. This is the topic. I will start from the basics. Science and technology. We often consider both these terms synonymous. Actually, there is slight difference, but both are similar terms, both complement each other. What is science? Science is a systematic study of the structure, behavior, and process of the that is pursuit of knowledge through meticulous and careful observation. What is technology? Technology is the way of doing things. That is practical application, pragmatic application of science. Next slide will be main essentials of research. What are essentials, most important factors for research? Then first thing is, what is research? A systematic, controlled, empirical, and critical investigation of a problem. That is a combination of experience and reasoning. That is a credible approach for discovery of truth. That is process of arrival as a plausible solution to the problem of the society. Research without societal relevance is only of intellectual curiosity. Research must be having societal relevance.
What are core values of research? Objectivity and honesty. Promote the aims of research, such as knowledge, truth, and avoidance of error. Accountability and transparency. Respect for IP, intellectual property rights. There should be no copyright infringement. Professional competence and professional discipline. Moral and social values towards social responsibility, human rights, animal welfare, compliance with law, and public health safety. Responsible publications and adherence to research protocols. Actually, these core values of research constitute the research ethics. Once, Francis Bacon, who was a philosopher of science, he told, effectiveness without values is a tool without purpose. Even if research is effective and effective both, yet still, if it doesn't possess any value, it is without a purpose. What are performance indicators of research? They can be divided into two categories. One, quantitative, and the other, qualitative. Quantitative appraisal refers to the volume of research, volume of publications, that is quantum of research produced. And qualitative is related to importance of that research. For example, if you publish a paper, then how many citations are there? What is your H index? What is your I index? And all these things matter for assessment and accreditation. Yes. The research ethics. There are three similar terms. One is moral, other is ethic, and another third one is legal or law. These terms seems to be similar, but there is also moral governs your personal interactions. Ethics governs your professional interactions. And law governs society as a whole. It may happen that an act may be ethical, it may be moral, but it may not be legal. For example, when you drive a car and on a particular road there is a speed limit is 50 kilometers per hour, and you think that I can safely drive that car above that limit. You may do so because there is no violation of any moral. Morally, you are confident that I can drive. If you are not a professional driver, then there is no violation of any ethic. But you will be fined for it. It is both. It may be both moral as well as ethical, but it is illegal because you have violated
have surpassed the speed limit, and you may be fined for, you may be punished for. Therefore, all these three terms seems to be similar, but have different connotations of. We are concerned with ethics, and ethics governs our professional interaction. We are in the land of Buddha, and Buddha propounded eightfold path to Nirvana. And here also there is eightfold ethical principles for quality. You will be surprised to know that in physics, Delma was inspired by, and he did very complex but very important models. He was the person who coined the term quarks, and he proposed SU3 symmetry, eightfold SU3 symmetry, that is related to isospin and hypercharge. Thus, this eightfold path for us in research ethics is duty to society. Conduct research relevant to societal needs and concerns. That is, research must be societal relevance. Research is conducted in a manner that is socially responsible by causing minimum harm to the environment. This is our duty to. Next thing, beneficence. This means that you must take care of participants in the research. A concept in research ethics that states that researchers should have the welfare of research participants as a goal of clinical or other studies. Protect physical, mental, and social well-being of the participants. Reduce risk to minimum. ये नहीं उधर दिखाई पड़ रहा है कौन से भेजिए उसी से कर दो तो पहले आइए फर्स्ट आइए conflict of what is conflict of interest? Conflict of interest, the situation in which your own interest or interest of a company or third party influences the research results, process, and data. We have to avoid conflict of interest, and you usually see that if you are awarded a project, then you have to submit a paper containing conflict of interest. You place that in that project there will be no conflict of interest. That is maybe financial, something else.
there should be no conflict, and you have to pledge for that. The other one is integrity. Integrity speaks of good research practice or quality research and strict adherence and compliance to research protocols and SOPs, a standard of review. If you comply with these well, then you are bound to have a quality research. Informed consent. It is not relevant to physics, but it may be relevant to geology, medical sciences, where clinical trials are carried out. Then, participants may be human, participants may be animal, or something else. This informed consent state that for human cannot do, especially in case of humans. You have to give him or her full details about your research. They are entitled to have full information. What are you going to do? And if they are participating, what risk they have. And you have to clarify this point very carefully and concisely. That means furnishing relevant information regarding a study before taking consent of the participant. This is a critical component of ethical research that protects the rights and welfare of research participants. Next is non-discrimination. There should not be discrimination on any basis, whether it is sex, caste, creed, religion, anything. There should not be any discrimination, except their capability, integrity, their competence. Select a candidate. You select, suppose you select a resource associate or research scholar. We select them on the basis of their competence, skill, not the basis of anything else. That is, whether it is on the basis of caste, religion, etc. So there should be no discrimination. Non-exploitation. It is self-explanatory. Researchers must take a step to ensure that their studies do not harm or exploit the participants, even participants. We have to maintain equivalence between our research and beneficence of the participants. Actually, this term, non-exploitation, is embedded in both beneficence and consent, informed consent. Privacy and confidentiality. Privacy concerns the person, and confidentiality concerns the data. Suppose, especially in social sciences,
you interview and she gives you detailed information. Then this is your responsibility that those informations must not be full. And if you have a store in form of data, then that must be without his or her consent. It cannot be back to and if you do not comply with the research ethics, then your actions constitute research mistake. And there are several categories. Fabrication means if you cook up data and deliberately manipulate the results, it is in category of fabrication. Falsification. Suppose you change your data and replace it with another data which is of your interest. That means you are manipulating this. And this is in the category of falsification. Plagiarism. Plagiarism is approbation of another person's work and present that as your own work. That is called plagiarism. We have to, and this also constitute research misconduct. Therefore, never plagiarize. There are types of plagiarism. Direct plagiarism, that means word or word transcription of someone's work without any quotation mark and without any acknowledgement or attribution. Self-plagiarism means presentation of your own previous work as due. Then that is called self-plagiarism. Mosaic plagiarism. That means you are not copying the words of, but you are copying the structure of his paper or his work. Then it is mosaic plagiarism. Accidental plagiarism. Your intention is not copy, but you have quoted that, and you have forgotten to give an activity. That is, in fact, that was not your intention to ignore or acknowledge the original author. But still, that accidental plagiarism also constitutes a research, whether your intention was there or not. Patchwork plagiarism, that you take some part from here, some part from there, and you collect all this into one and present it as your own work. That is patchwork plagiarism. Paraphrasing plagiarism. That means the basic design of the study is the same, but you paraphrase some words, some and claim it
as your home. That is paraphrasing plagiarism. And verbatim plagiarism. That is very similar to direct plagiarism. But there is a difference. In direct plagiarism, you do not give attribution or acknowledgement, and also do not give quotation. But in verbatim plagiarism, you give quotation, but you do not attribute to the original author. That is called verbatim plagiarism. You have copied word by word, but still you have given the quotation marks, but you are not attributing it. You are not acknowledging the original. Now, if you comply, if you adhere to these research ethics, the quality of research will be very good. And when quality of research will be good, then your institution, your university will do very good in NAAC assessment and accreditation. You can see this. Assessment and accreditation by NAAC. And it is very important. क्योंकि इससे पहले भी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी नहीं रही है, और वो तो आप लिख भी नहीं सकते हैं, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। तो नेचुरल है कि इस ढंग से करना है कि रैंकिंग, और इसमें हमसे जो भी सहायता आप लोग जो भी मांगेंगे हम। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 3 बार वर्कशॉप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में और एम कॉलेज में, तो रूसा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ हमने एक बार 4 दिन का, एक बार 5 दिन का, और फिर एक पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में नंबर ऑफ क्राइटेरियंस से नहीं, बेसिक सब कुछ करेंगे, लेकिन अब कॉलेजेस के लिए टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट इज ऑफ 3 categories. और यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और 250 marks means की टोटल 25% टोटल मार्क्स केवल यही है. तो इसमें बेहतर करना मीन्स की रैंक को बेहतर. आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट. हेलो, आवाज आ रही है? आप देखें 7 key indicators. Key indicators the books में chapters में, तो 7 chapters को समझिए एक की इंडिकेटर्स है, और हर की इंडिकेटर्स के साथ आपको क्वेश्चंस जिनको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट. तो मेजरमेंट 2 तरह का, एक क्वांटिटेटिव जिसमें QNM लिखा होगा, और दूसरा क्वालिटेटिव और उसमें QLM लिखा होगा. बट both of
these metrics are measured, उसमें marks हैं। और अंतर यह है कि क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स का इवेल्युएशन एक बेंचमार्क के थ्रू सिस्टम जनरेटेड, जबकि क्वालिटेटिव क्रिएटिव और वो मार्क्स। तो मैक्सिमम परसेंटेज है क्वांटिटेटिव। और आप देखेंगे जैसे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में भी वही है कि आप देखेंगे कि 62% 63% मार्क्स क्वांटिटेटिव के हैं और 37 to 38% क्वालिटेटिव। इसकी पीयर टीम के हाथ में रिलेटिवली कम है। पहले तो उल्टा था, 70 and 30, 70 क्वांटिटेटिव था और 30 ही पीयर टीम के हाथ। उसको थोड़ा सा चेंज और ये चेंज देखेंगे कि कॉलेजेस में 1 जून 2022 से और अभी यूनिवर्सिटी अब 1 अप्रैल 2020 बिल्कुल नया, और जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा वही है। अब देख रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटी के बाद resource mobilization for research, innovation ecosystem, research publications and awards, consultancy, extension activities, collaborations. आप रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स आप देख लीजिए कितना मार्क्स 120। बाकी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपकी सहभागिता चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स आप लिख के और लाते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। इनोवेशन एंड इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर ये इस्टेब्लिश करना होगा। रिसर्च पब्लिकेशन अवार्ड हैं। कंसल्टेंसी के थ्रू आप कितना अर्न करते हैं ये आएगा आपके क्वांटिटेटिव। बट यदि 50 लाख थ्रेशोल्ड वैल्यू है 50 लाख, यदि 50 लाख आपने कम किया है तो उसमें जो भी मार्क्स होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0, यू विल गेट 0। और यदि आप above 2 crores किया है that is 24 and that marks will be multiplied by। तो आप देख सकते हैं कि काफी टेक्निकल और काफी आपका क्या क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आपका क्या और क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ डेटा को कॉरस्पॉन्ड, तो आपका क्वालिटी ऑफ डेटा कॉरस्पॉन्ड कर रहा है क्वालिटी ऑफ रिसर्च से। एंड आप ये देखेंगे कि इसमें एक इंडेक्स पर भी होगा, हर चीज पर होगा, और कितना अवार्ड्स मिला, कितने पब्लिकेशंस मिले, वॉल्यूम ऑफ पब्लिकेशंस एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, हर चीज को, कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि ये तो ग्लोबल इंडेक्स से लिया गया है और उसको हम लोगों पर काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर जगह एक ही तरह का क्यूएस है, लेकिन है इसी तरह से। तो आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स 250 में क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स से आप 223 मार्क्स थे और रिसर्च क्वालिटेटिव केवल 27 मार्क्स। तो रिसर्च के लिए डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा, क्वालिटी ऑफ डेटा इतना अधिक इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 223 मार्क्स केवल क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट
The institution research facilities are frequently updated, and there are well-defined policies for promotion of research, which is uploaded on the institutional website and implemented. अब ये आप देख लें कि ये QL, that means this is qualitative. क्वालिटेटिव मैट्रिक भी आपको मिल जाता है, और इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आपको नहीं देना है, आपको एविडेंस हर क्वालिटेटिव मैट्रिक्स जो भी आप क्लेम करते हैं उसके परटेनिंग टू दैट क्लेम आपको जितना एविडेंस होगा क्रेडिबल एविडेंसेस प्रोवाइड करें। और पहला तो आपकी वेबसाइट पर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रिसर्च पॉलिसी, और वो इंप्लीमेंट किए गए हैं, इसके लिए आपको देने होंगे एविडेंस। ये देखिए फाइल डिस्क्रिप्शन, अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी आपका एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास एविडेंस है उसको अपलोड कीजिए। फाइल लिंक्स एज एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपलोड COs for all. CO means course outcome। आप लोगों ने दिया है कि आपको POs एंड PSO सभी वेबसाइट पर होना चाहिए। कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, PG in physics. PG in physics is program outcome। उस पीजी में 4 सेमेस्टर, और चारों सेमेस्टर के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस स्टूडेंट को क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या उसको जानना चाहिए, अब क्या एक्सपेक्ट लिखा हुआ। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर चारों में क्या क्या उसको। कोर्स आउटकम सेमेस्टर 1 में यदि 3 पेपर है, 4 पेपर है, तो हर पेपर का कोर्स का आउटकम क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा है तो उसमें क्या है, क्वांटम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा है तो उसमें क्या, तो आप इस ढंग से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है उसमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो पेपर वाइज आपको, और ये सभी आपको वेबसाइट पर अपलोडेड होना चाहिए जिसका लिंक देना होगा। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स सीड मनी to its teacher for research, और ये जो है वो पर ईयर के टर्म्स में। अब यहाँ पर ईयर यदि मान लीजिए कि सीड मनी दिया गया, तो एक नीचे देखिए, सीड मनी ग्रांट लेस देन 1 लाख पर फैकल्टी shall not be considered। यदि 1 लाख से कम किसी फैकल्टी और 20 लाख से कम सबको मिला, जरूरी नहीं कि हर फैकल्टी को हम 1 लाख दे दें और सीट बनी, लेकिन टोटल यदि करें, यदि वो 20 लाख से कम है तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलेगा जब वो 20 लाख से ऊपर हो। और आप देखेंगे कि इसमें आपको 50 लाख के ऊपर यदि है तो मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट,
percentage of teachers receiving national international award. 5 नंबर कहिए, आगे बढ़िए, हम दिन पर आ जाए, रिसर्च करिए, आगे चलिए। यहाँ से number of research projects per teacher funded by government, non-government, industry, corporate houses, international bodies during the last 5 years. तो ये देखेंगे कितने टीचर को मिला है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। मीन्स कि जितने यूनिवर्सिटी में टीचर्स है उनसे डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि 100 टीचर्स और आपको 10 जो प्रोजेक्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओ या किसी भी फंडेड, then it will be 10 by 100, that is 0.1, और यदि 0.5 से रेशियो कम है, you will be awarded 0 weightage, और जो भी उसमें मार्क्स है, आप देख रहे होंगे कि 15 मार्क्स का है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा नंबर, हमारा क्वालिटी है, इसके बार बार हम दें। आगे चलिए। Institution has created an ecosystem for innovation in their knowledge system, IQ, including awareness about IP. इसमें तो बहुत सा देना होगा कि IP याद पर आपने कितना वर्कशॉप कर, उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर आपने स्टैब्लिश या स्टार्टअप आपने स्टैब्लिश किया है कि नहीं, क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए ये आपकी कोई पॉलिसी है कि नहीं, ऐसे पूरा एविडेंस है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, एक तो स्टेटेड कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस का, और वो वेबसाइट पर रहना, और उसमें सब सच एथिक्स का, तो एथिक्स का, केमिकल एथिक्स का, एनिमल के बारे में सब एथिक्स रहने चाहिए, और एक वेबसाइट पर पूरी तरह से अपलोडेड होना चाहिए, जिसका लिंक देना हो। नेक्स्ट, number of patents awarded during the last 5 years. यदि 1 से कम है तो 0 मार्क्स, और मैक्सिमम है यदि 5 साल में 7 पेटेंट आपको अवार्ड दिए हो तो मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ PhD awarded or recognized guide during the last 5 years. ये भी जितने गाइड होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर, जितने, क्योंकि यहाँ पर हर लोग गाइड हो सकते, तो आप समझिए कि अप्रोक्सीमेटली तो अभी ज्वाइन किए उनको छोड़ दिया गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स आ जाए उनसे डिवाइड होगा, और यदि 1 से कम हुआ तब तो कोई नंबर, और मैक्सिमम होगा यदि 5 लोग 5 साल में, मीन्स की ऑन द एवरेज एक टीचर कैन PhD। इसी ढंग से आपके रिसर्च स्कॉलर्स का होगा कि GRF और SRF, टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स से वो डिवाइड है, और यदि वो 40% से कम है तो 0 मार्क्स, and if it is greater than 70%, you will get full marks. Next, number of research papers, a volume of research, और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ तो
तो ये जो पेपर होने चाहिए वो यूजीसी क्लियर में पब्लिश होने चाहिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद ये आपका 20 नंबर्स का है और 20 नंबर्स का एक और क्वेश्चन है। तो क्वालिटी ऑफ स्कोपस और वेव ऑफ साइंस क्या इंडेक्सिंग और एच इंडेक्स मीन्स कि वो पूरे यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स कितने गाइडेड सबका कितने रिसर्च और यदि वो लेस देन 5 है तो 0 एंड मैक्सिमम इफ इट इज ग्रेटर देन 35। तो यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स 35 के ऊपर बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है 5 से ऊपर है 5 to 10 में 1, 10 to 15 में 2 और 30 ग्रेटर देन 35 है मैक्सिमम। यही है कि इस तरह से हमको कैसे तैयारी करें और ये करना कुछ एक दिन का काम नहीं, एक कंटिन्यूअस आईक्यूएस और आईक्यूएस ही तो आप छोड़ दें पूरे टीचर्स को पढ़ा, क्योंकि सबसे प्रताड़ित होता है लोग कह देंगे तो बैठे रहते हैं बैठे हुए कुछ काम है और आईक्यूएस का तो हर आपका जो भी काम है सब आईक्यूएस। और इनफैक्ट यदि देखा जाए तो आईक्यूएस यही अनुसार अधिकतर जो भी काम यूनिवर्सिटी में होगा वो आईक्यूएस को इंफॉर्मेशन उसका होगा, क्योंकि आईक्यूएस को ही हर डेटा किस टीचर से डेटा उसको प्रोवाइड कर डिपार्टमेंट से हर चीज को आईक्यूएस फोकस करती है। तो पूरा जो आईक्यूएस का जो काम है इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी पॉलिसीज है उसकी मॉनिटरिंग है और उसके पहले उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ये आईपीसी और एन कॉलेज 2000 एक चीज हम लोग करते हैं। सुप्रीम जो उस डिसीजन और जब आए और जब 2016 में आए उस समय हमारे प्रिंसिपल्स कई बदल चुके थे। 6 महीने में कहा सर एकदम सबमिट 31 मार्च और 31 मार्च 2017 को इनको जो भी कहते हैं जो हम कहें उसके आगे सर एक कर दिया जाए उसके बाद फाइन बन जाए और वो सब तैयार सब कर दिया जाए, सब कुछ होते चला गया और हाईएस्ट सीजीपीए 3.27 जो कि आज के डेट में A+ समय A+ और A+ तो हम लोग ग्रेजुएट हैं। तो ये चीज अभी भी जो हम लोग किए हैं इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जब हमारा SSR हो गया है और जब डीवी भी चल रहा था उस समय VC होकर आए हैं का काम भी इन्हीं का है। तो इनसे आप इनके साथ आप काम करेंगे, इनको आइडिया देंगे, बिल्कुल आपके गलत नहीं बोलेंगे, सचमुच एकदम पीछे पीछे उत्साही बालक बन के आपके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन ये काम कराना होगा एक कॉलेज में हमने। थैंक यू वेरी मच। Sir, we will now have a very short interactive session. अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। If you have any queries, कोई जिज्ञासा है?
और हमेशा अवेलेबल है भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अभी भी जितने लोग को डिफिकल्टी होती है या तो एन कॉलेज आ जाता है या हम उनको यहाँ से गाइड कर देते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो एकदम हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. As we come to the end of this first technical session, I express my thanks to our speaker, Dr. Kumar, for highlighting the principles of ethical research and the NAC accreditation process. I thank our chairperson, Professor Ravna Jha, for chairing the session. Ma'am would like to express a few words to you. Thank you, Meenakshi. I'm really very thankful to you, sir, for enlightening all these things. And yeah, so we saw that his topic was research ethics, a precursor to quality research evaluation. This was his topic, and very comprehensively he enlightened the points that what is research innovation and what are the 8 very beautifully he said that like Buddha gave 8 paths to salvation. He also says that there are 8 benchmarks: duty to society, relevance to society. So all these things are to be kept in mind. These are the parameters of research and the things which are to be kept in mind. The research misconduct has to be avoided at every point in order to make research qualitative. And what are those things? Misconduct, fabrication, falsification, and plagiarism. He also pointed out there are many types of plagiarism which has to be taken in account: direct plagiarism, self-plagiarism. So all these are things, accidental and paraphrasing. So the research scholars have to keep in account that these are the points on which we have to check our research, that it doesn't come under the purview of plagiarism. And research is a very important point, as Sir pointed out, that the university has 120 points on research publication. Research publications and awards, we have 120. Yes. Quality and quantitative. So we have to be very careful about research publication. Thank you so much, sir, for giving us a comprehensive idea about research. Okay, thank you so much. Thank you, sir, ma'am. I also thank the reporters of this session and our audience for showing their patience and support. It's a very important announcement for you now. हम एक छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे। आपके लंच की व्यवस्था इंग्लिश डिपार्टमेंट में की गई है। जैसे ही आप इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, बाईं तरफ ये माइनॉरिटीज की बिल्डिंग है, जिसमें प्रथम तल्ले पर फर्स्ट फ्लोर पर इंग्लिश विभाग है, जहां आपके भोजन की व्यवस्था की गई है। लंच ब्रेक आधे घंटे का है। मेरा आग्रह है कि आधे घंटे के उपरांत आप इस सभागार में पुनः एकत्रित हो जाएं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि आप विलंब ना करें। आधे घंटे के उपरांत आप पुनः सभागार में उपस्थित हो जाएं, ताकि हम हमारे दूसरे तकनीकी सत्र की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद। आप